बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। ख्वाहिश होती है, सबको अच्छा लगता है बाज़ लोगों के अलावा कि ट्रैवल करें, दुनिया घूमें। क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो दुनिया में 195 में से 194 ममालिक घूम चुका हो आया हो? आउट ऑफ 195 194 ममालिक ये जा चुके हैं। पाकिस्तान 3 दफ़ा आ चुके हैं। और ये कौन हैं? ये एक भारतीय शहरी हैं जो कि व्लॉगर हैं, अपने ट्रैवल को भी कैप्चर करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में दुनिया को बताते हैं, और इनका नाम है रवि प्रभु। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देते हैं, ये बाय द वे बहुत से लोग इंक्लूडिंग अस जिन्होंने पूरा पाकिस्तान शायद नहीं देखा होगा, ये पूरा पाकिस्तान भी देख चुके हैं। और ये तीसरी दफ़ा है कि ये ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान आए हैं, ब्लॉगिंग करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। दुनिया में सिर्फ 276 लोग हैं, 276 पीपल दे आर इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया घूम चुके हैं, एज इन पूरे 195 ममालिक की सैर कर चुके हैं। और इंशाल्लाह जब ये कर लेंगे तो ये 277 में होंगे। दिस इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन इनटू द स्पेस। सो ये बहुत ही रेयर बात है। रवि को हम कहेंगे खुश आमदीद। Ravi, it's good to have you over. We have heard about you a lot, and finally we have gotten a chance to meet you in Karachi. So this is your 3rd time. But you know, is it like always that you once go to a country and then you want to go back to that country? What brought you back to Pakistan for the 3rd time? Yeah, to be honest, since I don't have a lot of time traveling, I'm not a full-time traveler. I can only cater maybe hafta 15 days for one particular travel experience, and then when you see that the country is much broader and wider, so बहुत सारा चीज़ है देखने के लिए, इसलिए बार बार So पहले आपने कुछ हिस्सा देखा and then you again came back and saw and went to the rest of it, and now where have you been this time around? This time I crossed the Wagah border on foot, and then I went to Lahore, and Lahore to Multan, because there is one prehistoric temple there in Multan. Interesting. It's called the Prahaladpuri temple. I went to see the Prahaladpuri temple. From there I took a train journey because I wanted to experience Pakistani trains. Oh, wonderful. And then train journey to Karachi, and then from Karachi I went into Balochistan to Hingol National Park. There's a Hinglaraj Mata, there's one prehistoric, one very famous temple. Very temple. So, and then I came back to Karachi for your show. Oh, wonderful. So, naturally एक सवाल बनता है, you know, this, I'm sure a lot of people must have asked you this question, that out of 194 countries that you've been to, you know, it must be difficult to name one. You can name 5 जहाँ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा, or you know, which left an impression on you. Okay. Definitely Pakistan, because having been born in India and raised in India, you have a different perception of a country, which was also once part of undivided India. True. And then there's a lot of misconceptions on both sides. So I've always been curious to see what Pakistan is like. And then once I came, क्या पाकिस्तान में सब वैसे ही नजर आते हैं जैसे बॉलीवुड फिल्मों में नजर आते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। So the first time I came to Pakistan, जब आपने यहाँ आके देखा कि लोग आदाब नहीं कर रहे हैं दूसरे को, तो did it surprise you? No, it didn't surprise. I mean, since I've traveled a lot, I mean, I understand. But Bollywood, I mean, it shows a lot of other things in India that don't exist as well, because it's a creative industry, so we have to understand. But first time I came to Pakistan, I was really surprised by the respect and the love that was given to an Indian. Every place I went to, मैंने बोला था मैं इंडिया से हूँ, साउथ इंडिया से हूँ, मेरा मदर टंग तेलुगु है। Wow. और इज्जत बढ़ जाती है। So these days, this trip, I tell everybody I'm a Telugu speaking. Everybody says Pushpa झुकेगा नहीं. So everybody has seen Pushpa. It's like everybody knows Prabhas. Everybody knows Ramcharan. So it's very yes. Tollywood films are really popular now. Yes. Who hasn't watched them? Yeah. So the first time I've been to northern areas of Pakistan. I've been to Babusa Top, Naran Valley, and then Abbottabad, Lahore. What are the similarities that you find between the two countries? You've been to northern areas of India as well. Yeah, yeah. So I think, I mean, rather than talking about similarity, it's easier to talk about the differences, because the differences are lesser than the similarities. So what are the differences then? I don't see any, to be honest. Wonderful. Other than the geographical land border, the people look very similar. They're lighter skinned people in India, darker skinned people in India, just like in Pakistan.
and then the language is very similar. बहुत ज़्यादा ज़ुबानें हैं, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक जैसी चीज़ें इन्होंने भारत और पाकिस्तान में नोट की हैं, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान की तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी ये बहुत सारे, मतलब 194 मुल्क ये घूम चुके हैं। कभी किसी मुल्क में गए, कोई ऐसी सूरत हाल बनी कि आपने सोचा हो कि यार प्रॉब्ली यहाँ नहीं आना चाहिए था, या यहाँ आके ज़रा कोई टेंशन वाला माहौल हो गया, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? बहुत बार होता है, बट वंस यू आर अ ट्रैवलर आपका माइंड में ये सब चीज़ होता है, क्योंकि यू आर वेरी अडेप्टेबल, मीनिंग एक बार प्लेन मिस होता है, सो कई बार मेरा गलती से, कई बार airline की गलती से, but you get used to this stuff, right? Because you're a seasoned traveler, it doesn't really affect you a lot. I mean, of course, there are situations where you say, all right, I should not have been in this situation, but this situation could happen anywhere. It could happen in India, it could happen in USA, it could happen in Pakistan. So as a traveler, you're much broad-minded. So thereby. All right, Ravi, hold that thought. जिनसे ब्रेक में भी हम मुसलसल गप्पे लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे भाई कौन से खाने अच्छे लगे 194 मुल्कों में, कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा हसीन है, कहाँ हमें अगली दफ़ा जाना चाहिए। सो यस, रवि प्रभु हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक भारतीय व्लॉगर हैं, ट्रैवलर हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है इनकी कि ये एक आईटी कंसल्टेंट है, फुल टाइम इनकी जॉब है। वैसे आजकल अमेरिका में आईटी की वजह से रहते हैं, लेकिन ये काम करते हैं, छुट्टी लेते हैं और फिर घूमते हैं। सिर्फ दुनिया में 276 ऐसे लोग हैं जो तमाम ममालिक घूम चुके हैं। सो ये आखिरी मुल्क आपने कौन सा छोड़ा हुआ है? वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। सो ये क्यों, अमेरिका से तो करीब है, ये आपने क्यों छोड़ दिया फिर? बिकॉज इट्स सो क्लोज, I thought that would be easier, but then this happened to be the most difficult country for me to get a visa. It took me 6 months to get a visa. There is no Venezuelan embassy in the USA. So I had to go to Mexico to apply for a visa, and then I have to go back to Mexico to get the visa. So अभी आपके पास वीज़ा है? वीज़ा अप्रूव हो गई, मगर अभी प्लान कब कर रहे हैं जाने का? I have 3 months time. अच्छा, सो इन 3 महीनों में आप कभी भी वेनेजुएला चले जाएंगे और फिर आपके 195 मुल्क मुकम्मल हो जाएंगे। What's next then? You know, this is an achievement that you would have achieved. This is a thing done. Yeah. See, once a traveler, always a traveler. So I was thinking, this is my 3rd and last trip to Pakistan, and this trip I could not go to Mohenjo-daro. What does it mean? क्या आप दोबारा आएंगे? There you go. So that's how, right? When you travel, it's impossible. Like you were born and raised in Pakistan, let's say. And then you probably haven't seen all of Pakistan. So one lifetime is not enough to see a country. Just imagine the world. Yeah, true. So you would keep traveling, and you know, you would go to other parts of the countries that you hadn't been to. Right. Oh, wonderful. So and I'm ashamed to say that in India there are 28 states. I have not seen 5 or 6 states. So there is still a lot of things pending. India एक बड़ा मुल्क है, पर चाइना इतना बड़ा मुल्क है। Have you been to China? Yeah, I've been to China 3 times as well, but probably covered less than 5%. But luckily I've been to all 50 states in the US. अमेरिका में आप 50 की 50 स्टेट्स घूमे। सो आपको दुनिया में लैंडस्केप वाइज कौन से मुल्कों ने या कौन से खित्तों ने ज़्यादा मुतासिर किया? खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी की बात करें। Usually people are either mountain lovers or beach lovers, and I have. So if you let's you know talk about both. सबसे खूबसूरत बीचेस कहाँ मिले आपको दुनिया में? Seychelles, yes. Maldives. Bora Bora in Tahiti. And all of the eastern coast of Africa, you would be surprised. In Madagascar, there's a place called Nosy Bay. Happens to be one of the finest beaches. And the Caribbean has amazing beaches, Dominican Republic. And you have Mexico, beaches of Mexico like Cancun, Cozumel. And then... और सबसे खूबसूरत पहाड़? Obviously the Himalayan ranges and Karakoram ranges. Certainly. Yeah, and I went to this Hunza Valley, and I really loved the vibe in Hunza, the mountains in Hunza, driving through Kunjarab, all the way to Kunjarab. Beautiful scene. I forgot the name of this mountain. What is the biggest mountain in Nagar Valley? It's not Nanga Parbat, it's not K2. I'm drawing a blank. Okay. Nagar Valley का तो हमें पता है. In Nagar, I probably I'll get the name before the end of the show. But I really loved that landscape from Hunza. You look at that particular mountain and drive through. It was an amazing feeling, you know.
वंडरफुल। एक ट्रिब्यूट हम दे दें साथ में, हमने कुछ गाने चलाने हैं और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको दुनिया में खाने कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। यू नो, मिला ही एक बंदा जिसने पूरी दुनिया घूमी है तो उससे फिर पूछे ना। रवि प्रभु हमारे साथ मौजूद हैं। बाय द वे, हम म्यूज़िक की इससे पहले सब कॉन्टिनेंटल म्यूज़िक की बात कर रहे थे। ये तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु से इनका ताल्लुक़ है, आंध्र प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है। ओके, टॉलीवुड फिल्में ऑब्वियसली देखते हैं, उनके फ़ैन हैं, यहाँ भी बहुत लोग फ़ैन हैं। आपको खाने दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छे लगे? इंडिया पाकिस्तान के अलावा, हाँ, वो तो हमारे तो हैं ही अच्छे ना। सो आई एम अ फिश लवर, आई रियली लव जापानीज क्विजीन। आई समहाउ तो सबसे अच्छी सुशी आपको जापान में मिली? Yeah, अच्छी sushi obviously is from Japan, but in the US there are hundreds and thousands of restaurants. You get something very similar or something as good as Japan. So अमेरिका में भी आपको अच्छे सी फूड मिलते हैं। Wonderful जी। Ravi, we hope that you come back again Definitely soon and you see the rest of the country that you didn't get a chance so far. Thank you for being with us. Thank you so much. Thank you for being with us. आप इनको Instagram पे follow कर सकते हैं। आप अपना Twitter handle बताओ। Yeah, my Instagram handle is Soaring Eagle Trots. Soaring Eagle Trots. So like a soaring, like a flying eagles that trots. Wonderful. That's interesting.